Subhanallah, Bismillah Rahman Rahim. Good afternoon, good evening to everyone joining us from around the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Madiha Rubab, and I'm honored to moderate this a very timely session hosted by Al-Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful, titled as DigitalSukuk, a tokenization innovation in Islamic finance. Over the next 45 to 50 minutes, we will explore how tokenizing Sukuk, backed by real world assets, can transform over $3 trillion in currently illiquid Islamic assets into more timely, accessible, ethical opportunities for everyday investors. Just a second, please. Apologies. So, we will also clarify a critical distinction that digital Sukuk are not cryptocurrency. They are practically asset-backed security tokens fully compliant with Sharia and global regulations like VARA and PVARA. I will request everyone to submit your questions in the Q&A in the chat box, and they will be answered in the Q&A session. We'll try to dedicate the last 15 minutes for your inquiries. It is my privilege to introduce our keynote speaker, Mr. Fahad Siddiqui, CEO and founder of Mabrook Financials, Canada. Fahad Siddiqui Saab is a blockchain and Islamic fintech expert, a seasoned Islamic banker, and a digital transformation specialist with experience across North America, MENA, and the Far East. A brief introduction about Al-Mabrook is that he has pioneered the world first Sharia-compliant blockchain platform for real-world asset tokenization, including digital Sukuk using standards like ERC 3643 to ensure compliance, asset segregation. There is a difficult word for it in Ifrazul Mojudat and automated profit distribution via smart contracts. He is presently serving as Group Digital Product Owner at Republic Bank, Trinidad and Tobago, and CEO of the TAIF Digital Institute for Islamic Finance. Fahad Saab, Assalamu alaikum. Now the stage is yours. Thank you, sir. Walaikum salam. Thank you, Sister Maria. Assalamualaikum everyone. Good morning from Canada. Inshallah, we have so much to unpack today, and we'll try to keep this very interactive. Once I'm done with my presentation, feel free to ask any question. Do not hesitate, inshallah. We are still learning with each other. Go ahead. Sir, a humble request. We'll make it bilingual. Okay, all right. Thank you. Sure. Thank you very much. I think I should have done it. तो सबको सलाम मेरा और हम आज अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा कंसाइज करेंगे और हम ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे कि जो भी हम लोग रिले करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया अल-सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं।
एंड ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैंने इस्लामिक बैंक 20 साल पहले स्टार्ट की थी, तो मैं सदाकत साहब जो इस कॉल पे है, मैं उनसे सीखता था इस्लामिक बैंकिंग। मगर इसके बाद क्या, अब क्या हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एटलीस्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और हम अपने जो भी डिस्कशंस हैं उनको हम लोग एक प्रैक्टिकल वे में ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बल्कि इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट initiative that Al-Sadiq Institute is basically taking out and leading. With that, inshallah, I will start my presentation. So we're going to discuss about digital sukuk. What I have done is that, and I'm sure this slide will be shared with everybody. इस स्लाइड में मैंने काफ़ी चीज़ें कल डाल दी थी, क्योंकि because what happened is that when sometime you are presenting, there are some stuff that you don't kind of outlay there. But what I've done is that when you're going to see the PowerPoint, inshallah, everything is there with the best of our ability. We have also put the Sharia structuring side of it, which disclaimer that this is pending with our Sharia board member to basically review and approve. Anyhow, with that मैं start करता हूँ। स्लाइड में मैंने काफी चीजें जो हैं इनकॉर्पोरेट कर दी थी आप सबके लिए, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको लाइन बाय लाइन चीजें पता चल जाएं कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड कंटिन्यूअसली इंशाल्लाह we'll have other opportunity to discuss as well. So today focus is only on digital sukuk. Of course हम इसमें ब्लॉकचेन भी टच करेंगे। हम इसमें जैसे बहुत अच्छी बात मदिया ने कही, एंड आई एम ग्लैड शी ब्रिंग इट अप, कि जो डिजिटल सुकूक या टोकनाइजेशन जो है, इट डज नॉट ओनली मीन्स क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टोकन होते हैं, हम उसको भी देखेंगे, उसमें एक फ़र्क क्या है क्रिप्टो करेंसी और सुकूक में, उसको भी हम साइड बाय साइड देख लेंगे। एंड देन वी गो फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग साइड, और फिर हम देखेंगे हाउ कैन वी डू इट, फिर हम उसका एक विजुअल देखेंगे, और फिर हम उसका Q&A करेंगे इंशाल्लाह। Alright, with that, let me just proceed with that slide. So we'll start with the first um, uh, what you call the awareness, call it like awareness or more educating slide, where we are going to see what is the difference between a cryptocurrency and security token. As Madiha was stating, security token means real world asset. Tokenization is a token which is tied to some asset, and in of course in some regulations like PVARA or VARA, Virtual Asset Regulatory UAE, they are named as ART. ART means nothing but Asset Reference Token. तो एक ही चीज के ये बहुत सारे नाम हैं। कहीं इसको कहा जाता है सिक्योरिटी टोकन, कहीं इसको कहा जाता है ART, एसेट रेफरेंस टोकन, कहीं इसको डिजिटल एसेट कहा जाता है। तो है ये एक ही चीज। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ऑन माई लेफ्ट साइड, क्रिप्टो करेंसी जो होती है, इट्स मोर लाइक योर कैश वट एवर। हम किसी भी चीज को क्रिप्टो करेंसी को जब होल्ड करते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी किसी एसेट टाइप टाई नहीं होती। मीनिंग कि आप बिटकॉइन लेना, बिटकॉइन किसी एसेट से टाई नहीं हुआ हुआ। सबसे अच्छी एग्जांपल ये है, इथीरियम कॉइन भी किसी एसेट से टाई नहीं हुआ हुआ। उनका एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, आप बिटकॉइन के इकोसिस्टम को यूज करेंगे, तो बिटकॉइन आपसे बिटकॉइन पैसे मांगेगा। वो आपसे पाकिस्तानी रुपीस नहीं मांगेगा, तो वो आपसे US डॉलर नहीं मांगेगा। वो कहेगा इफ यू वांट टू यूज माय सर्विस प्लीज पे मी इन बिटकॉइन। सिक्योरिटी टोकन क्या होता है कि सिक्योरिटी टोकन हम किसी भी रियल एसेट को, मीनिंग प्रॉपर्टी है, या कोई कमोडिटी है, या इवन सुकूक हम जिसको आज डिस्कस करेंगे, आप इसको लेके और इसके टोकन प्रोड्यूस कर देते हैं। और प्रोड्यूस करने के बाद इसको ब्लॉकचेन पे रख देते हैं, और इसको फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन ट्रेड होता है। तो ऑल इन ऑल होता क्या है कि आप बिटकॉइन, what we have done is that we have taken the traditional finance, and I will just switch in English because I know a couple of folks have joined out of from Pakistan. I was just trying to explain that what is the difference between the cryptocurrency and uh, and the security token, and there are various way to call out security token such as ART, digital asset, or security token, while cryptocurrency, as we know, they are like Bitcoin, Ethereum. The difference is the cryptocurrency is not backed by any asset. It is a medium of exchange to do something, and security token is hardly tied, hardcore tied with a real tangible asset. अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पर रेगुलेशन जो होती है मोस्टली, अब हम पाकिस्तान के एग्जांपल लें तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पेमेंट डिवीजन इसको मैनेज करेगा, हैंडल करेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज नहीं। सिक्योरिटी टोकन या ART या डिजिटल एसेट, इसको पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी SEC के साथ रेगुलेट करेगी। मीनिंग के जैसे हम लोग पाकिस्तान में स्टॉक खरीदते हैं,
तो ये स्टॉक की रेगुलेशन पे टच करेगा, नॉट द क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में इजी पैसा है, तो इजी पैसा में अगर आप कहीं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में अगर आपके पास कैश पड़ा है उसको आप यूज करते हैं, तो वो क्लासिफाई होगा स्टेट बैंक में पेमेंट पेमेंट रेल या मीडियम ऑफ या करेंसी बेसिकली। और जो इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ स्टॉक, बट जब आप सिक्योरिटी टोकन या सिक्योरिटीज या स्टॉक खरीदते हैं मार्केट से, ऑफ कोर्स उसके लिए आप इजी पैसा को एज अ पेमेंट यूज कर सकते हैं, मगर देन यू विल बी बेसिकली बाइंग अ स्टॉक फ्रॉम सम एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन या जो ब्रोकरेज है वो एसईसी से रेगुलेट होगी। तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू बेसिकली बाइफिकेट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन इस्लामिक फाइनेंस एज पर द आईएफई रेगुलेशन। अभी हम लोग ने क्रिप्टो करेंसी को किसी सैनिटाइज नहीं किया है, या कोई अभी हमारे पास कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं आया है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। हाउएवर सिक्योरिटी टोकन भी आईफी की 62 या 63 स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ कहीं, बट वी हैव अ क्लियर गाइडलाइन ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट टूल्स, और उस इन्वेस्टमेंट टूल की सिक्योरिटी को, सॉरी गाइडलाइन को लेके हम लोग एक सुकूक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिजिटल सुकूक स्ट्रक्चर कर सकते हैं। Or inshallah, if you have any question, then let me know. So I will just summarize it in English as well. So what I was explaining that the regulators of cryptocurrency and security token are always different in various countries. So in an example of Pakistan, we have SAC slash PVARA, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority, which is regulating it. While State Bank of Pakistan Payment Division, I'm not sure about the name of that division, but that division will be taking care of the cryptocurrency side of it, if it is allowed in Pakistan. Okay, so let's after that kind of a bifurcation of what we are dealing with, so we'll just go to the route of security token. अब हम सिर्फ security token की बात करेंगे या asset reference token की बात करेंगे, अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करेंगे। What happen is that what is digital sukuk? So digital sukuk की अगर हम एक प्रोडक्ट देखें, like whatever we are processing, what are we getting as a consumer? If somebody is going to buy something, then what is going to buy? We just touch that. That is going to be the security token. So you will basically paying for your token using fiat currency, or maybe you can use some approved cryptocurrency as well, like Bitcoin, Ethereum, or XRP. And you can go ahead and you can buy that token. The moment you buy the token, basically that token ends up in your wallet. सो डिजिटल सुकूक क्या है कि जब हमने वो एक टेंजिबल एसेट लिया, वो रियल एस्टेट भी हो सकता है, और इसको जब भी डिजिटल सुकूक या टोकनाइजेशन को आप सोचें सिक्योरिटी टोकन की, सो थिंक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी कंपनीज लिस्ट होती है, यहाँ भी कंपनीज लिस्ट होंगी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी स्क्रीनिंग होती है किसी भी एसेट की, कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू, मैं पैसे रेस करना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, पब्लिक जा रही है, सिमिलरली यहाँ भी उसकी स्क्रीनिंग होगी और फिर वो लिस्ट होगा। तो डिजिटल सुकूक या टोकनाइजेशन सुकूक जिसको हम कहते हैं, टोकनाइजेशन और सुकूक कहते हैं, इसमें हमारे पास कोई एसेट होगा पीछे से, या कोई हम पैसे रेस हो रहे होंगे, और इश्यूअर कहेगा कि आई वांट टू रेस सम मनी। वो मनी किसी भी जो पैसा है वो रेस करना चाह रहे हैं, वो किसी के लिए भी हो सकता है, वो सॉवरियन या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के लिए भी हो सकता है, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। एक हम डैम भी बना सकते हैं, या हम एक छोटा सा सुकूक कर सकते हैं स्मॉल मीडियम फाइनेंसिंग के लिए, कि वी हैव वेरियस businesses in Pakistan or elsewhere, and those business owner need some funding, and for that funding we create a sukuk, और sukuk की vehicle को हम लोग structure करके what we do is that we tokenize that sukuk। और tokenization in hardcore means कि उस asset जो हमने उसको build किया है, और Islamic finance में one thing is very important, that you cannot have commingled, for example, co-mingling of the funds। तो हर फंड की एक अलग बैलेंस शीट होगी, एक अलग उसका उसका अकाउंट होगा, और उस अकाउंट को या उस कंपनी जिसमें वो लिस्ट हुआ है, जिसमें हमने उसको लीगली स्ट्रक्चर किया है, उसको हम टोकनाइज करेंगे। और टोकनाइजेशन जब होगी तो प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा, टोकनाइजेशन जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपसे पूछेगा कि वो हाउ यू वांट टू टोकनाइज इट, तो हम उसको कहेंगे कि भाई आप 1 रुपए का एक टोकन रखें, एंड दिस इज द पावर ऑफ द टोकनाइजेशन।
जो कि हमें ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलती, उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स. So tokenization, when you tokenize that asset, basically platform asks you how many token you want to create or mint. And once those tokens are minted, they are basically on the blockchain for investor to buy and trade, just like they would buy Bitcoin and trade. Okay. Um, Tokenization, digital sukuk की representation क्या है? There will be a certificate, of course, which will be issued by the platform. And but in our stock market, we have electronic PDFs, and we have those papers which are giving us the authentication of the ownership of the shares. Blockchain may we can also have that, but on top of it, we can also verify the transaction on the network itself. Meaning कि अगर Sir, your voice is हमको gone. this is it okay. Let me put my next one. We can't hear you, sir. Can you hear me now? Is it better? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, you're welcome. Thanks for letting me know. So once the tokenization or the tokens are issued on the blockchain, जब वो blockchain के ऊपर token चले जाते हैं, just like Bitcoin, you are able to basically go and see them and buy them. You take your decision and buy them. And once you buy them, then you can trade them. So what is the difference? If somebody asks like, what is the difference? Like, I mean, what efficiencies we have created, what kind of benefits we have created for the society or the community or the consumer. It is basically we have taken out the manual work and those complex settlement which are happening in the capital market or stock market using blockchain. What is the example? The example is that when I tokenize, I don't need to write anything on the paper. I can just go onto the blockchain, use the blockchain as a ledger or the what you call जैसे उर्दू में हम कहते हैं इसको खाता. और उस in that ledger I can write that transaction. उस खाते में मैं सारी ट्रांजेक्शन लिख दूंगा. और जब भी कोई इस टोकन को बाय करेगा तो वो खाता पब्लिक के लिए अवेलेबल है. एनीबॉडी कैन गो एंड एक्सेस. उसको मेरा नाम नहीं पता होगा, मगर जब मैं उसको टोकन का एड्रेस दूंगा या उसको आईडी टोकन आईडी दूंगा एक सादा अल्फाज में, तो वो ब्लॉकचेन पे जाके इसको वेरीफाई कर लेगा कि ये लेजिट है कि नहीं. क्योंकि ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेजर है. वंस यू राइट एनीथिंग ऑन द ब्लॉकचेन यू कैन नॉट डिलीट इट. सो क्या होता है कि जब आप उसकी मिंटिंग से लेके और उसकी एंड ऑफ द साइकिल, अगर सिक्योरिटी टोकन की हमारी सुकूक की एग्जांपल में हमने सुकूक के टोकन रखे, हमने कहा सुकूक 3 साल की पीरियड है इसका इसका ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको मिलेगा हर महीने. 3 साल बाद हम आपसे आपके आपके पैसे वापस कर देंगे, कैपिटल सरमाया आपका वापस कर देंगे. वी आर गोइंग टू रिटर्न योर कैपिटल अलॉन्ग विद द प्रॉफिट. और उसके बाद हम आपके जो है इसको कैंसिल कर देंगे फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप को. तो कैंसिलेशन का मीनिंग है कि हमने टोकन को बंद कर दिया. तो टोकन की मिंटिंग से लेके टोकन की बर्निंग तक, एंड तक सारा एनालिसिस और उसका जो बैक ट्रैकिंग है वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है. ऑल वी नीड इज टोकन आईडी टू गो एंड लुक इनटू इट. तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम Q&A में भी डिस्कस कर लेंगे. इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड वो टूल्स क्या होते हैं, उसकी कंप्लायंस रेगुलेशंस क्या हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. इसके बाद तो ये तो एक छोटी सी हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करी. फिर हम ये सोचे कि वेयर वी आर गोइंग टू प्रोग्राम दोट बिजनेस लॉजिक. अब इस पावर पॉइंट में आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है डाउनटाउन टोरंटो में 3 बेड की. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बिल्डिंग के पेपर्स, इस बिल्डिंग के कितने पीरियड के लिए हमें सुकूक रेस करना है, कितने टाइम के लिए हमें सुकूक रेस करना है, उसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिक्स क्या होगी, ओनरशिप ट्रांसफर्स कैसे होंगे, वो सारी जो बिजनेस रूल्स हैं और लॉजिक जो हैं हम रादर देन डूइंग अवर ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग व्हाट हमारे पास जो है वो सिस्टम्स होते हैं उसमें हम कोड करते हैं. सिमिलरली ब्लॉकचेन में हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम उसको कोड कर देते हैं. Or once smart contract is basically written and it is audited and it goes live, then smart contract basically does all the things on the blockchain. तो इंटरफेस और ब्लॉकचेन के बीच में जो चीज बैठी होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप सारी लॉजिक लिख देते हैं. ये भाई हमारी लॉजिक है, ये हमारी लीगल लॉजिक है, ये हमारी शरिया कंप्लाइंस लॉजिक है, ये हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक है, और वो उसमें रन हो जाता है. तो जो सिस्टम मदिया बता रही थी ERC 3643 स्टैंडर्ड, इस तरह बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं
मगर सबसे बेस्ट है वो उस वक्त ERC 3643 है, जो कि एक अच्छा ग्रेड, या आप कह लें इंस्टीट्यूशन ग्रेड, या आप उसको कह लें मार्केट रेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहा जा रहा है। हम लोग वो यूज़ करते हैं, मबरूक वो यूज़ करता है, बट बहुत सारी कंपनियां ERC 20 भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि सबसे बेसिक वर्जन है सिक्योरिटी टोकन का। बहुत सी कंपनियां ERC 1400 भी यूज़ करती हैं, और मेरे ख्याल से 5 या 6 स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। तो वो जब हम स्टैंडर्ड कहते हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है, उसमें मिंट करते हैं टोकन, उस स्टैंडर्ड पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए होते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि हमने ये भी देख लिया, कि थोड़ा बहुत देख लिया कि लाइक व्हाट टोकनाइजेशन मींस, व्हाट डज इट sukuk represent on blockchain. हमने we also discussed something about efficiency, transparency, because you can go and tag anybody, any token, and the accessibility. We also touched a little bit about what a smart contract is, and the last one is the provide liquidity. Right now, what happened is that when I buy Sukuk, it's like a black box. I purchase something, I can see it, right? But I can, if I want to do something, then I need somebody to go and sell it. Just like in stock market, maybe I will not be able to sell it directly, right? Similarly, in Sukuk, what happened is that you're not able to sell it directly on the market. You need somebody, or you need to do some function. You need to wait for a couple of days to get your money back. In blockchain, just like Bitcoin or XRP, it leverage that features. You can go and you can say, I don't want this token. I want to use it for some my emergency stuff, or I want to liquidate right now. You can just put that token on the secondary market or the digital exchange, and you can sell it to anybody. So that unlocks a lot of power, because now what we are doing is that not only we are attracting a lot of people, because a lot of people have problem on locking something for so many years. They want a, like a easy access, especially the retail investor who are like us, right? They would want to exit anytime. If we give them that assurance that you can exit anytime, they would love to buy Sukuk if they are affordable. सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अनलाइक ट्रेडिशनल सुकूक, जिसमें सेटलमेंट में टाइम लगता है, कभी 3 दिन कभी 7 दिन आपको पैसे आने में, यहाँ आप रियल टाइम उस टोकन को या उस डिजिटल सुकूक को सेल कर सकते हैं, यू कैन बी लिक्विडेट। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को टच कर लेंगे। आई थिंक एवरीबडी ऑन दिस ब्रिज अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमारी 5 ट्रिलियन तो नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 6 ट्रिलियन पे हम टर्मिनेट करेंगे, या मे बी 9 ट्रिलियन के आगे की प्रोजेक्शन है इस्लामिक फाइनेंस मार्केट में। सुकुक हम लोग ने अभी तक कोई 1 ट्रिलियन कर चुके हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वट एवर द अमाउंट इज सब्सटैंशियल अमाउंट, बट what we have done is that we haven't crossed the bridge of making it affordable to ordinary retail investors. मीज़ान बैंक पाकिस्तान ने और एमरिट्स बैंक ने, यूएई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं सुकूक को अफोर्डेबल करने में, बट स्टिल अभी तक $1 का कोई सुकूक नहीं आया। इसकी वजह, मैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उनके लिए तो कोई इजी है, लाइक उनके लिए तो ये विन है कि वो $1 कर दें। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू डू अ सुकूक ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट, on traditional system, the cost is really high. The operational cost is so high that you cannot just do a $1 sukuk, because processing $1 sukuk would take a typical bank to invest, let's say, maybe $25 or $30. So it won't make sense. So they put the bar of 5,000. Some minimum I've seen, I think, is 15,000, but maybe, yeah, somebody will be doing 5,000, but still not very common. Especially sovereign sukuks, they are very expensive, like starting in, for example, in the market like Europe, US, UK, $250,000 plus. So अब what I was trying to explain is कि हमारे जो ट्रेडिशनल सुकूक है वो अफोर्डेबल नहीं है, और हमारे पास 2 मिलियन मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड है। तो हम सवाल ये होता है कि क्यों हम $1 का सुकूक नहीं लॉन्च करते, और उसकी सीधी सी बात यह है कि ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है, जो कि एक ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इशूअर्स का, वो इतना एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव क्यों है कि आपको कोई बैंक चाहिए, बैंक के बाद उसमें लोग हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर आप कैपिटल मार्केट में भी रजिस्टर करते हैं, राइट। उसके बाद आप इसको ट्रेड करते हैं। तो जब इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, मिडिल मैन जमा हो जाते हैं, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो $1 का सुकूक करने के लिए बैंक को
वो ये नहीं उनकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वही कोई $20-25 होगी। तो इस वजह से ये नहीं हो पाता। ऑफ कोर्स के डिजिटल सुकूक का मतलब ये नहीं है कि इज गोइंग टू बाईपास ऑल द रेगुलेशन। डिजिटल सुकूक क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इतना कॉस्ट इफेक्टिव दे देता है कि यू कैन फ्रैक्शनलाइज योर टोकन इनटू दैट एक्सटेंट। $1 इज एन एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स मबरूक में हमने जब कॉस्टिंग करी थी, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड में, हमने कहा था कि $100 का एक टोकन होना चाहिए, राइट। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी कोई होगी $9 के करीब, क्योंकि ज़ाहिर है आपने उसकी केवाईसी करनी है, उसका ईएमआई चेक करना है, फिर सीएफटी चेक करना है, वो सारी चीज़ें आप जब रिस्क चेक करेंगे, उसको ऑनबोर्ड करेंगे एक दफ़ा कस्टमर को, तो $9-10 बनेंगे। एंड यूजिंग एआई एंड हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस वी कैन डू दैट। जो मोस्टली कॉस्ट जो ज्यादा सबसे ज्यादा पड़ती है वो पड़ती है आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मीनिंग के टोकन खरीदा, परचेज किया, वॉलेट में आया, तो वो जो सेटलमेंट होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। अगर उसमें 4 सिस्टम लगे हुए हैं, 2 लोग लगे हुए हैं या एक लगा हुआ है, तो यू हैव टू पे। ब्लॉकचेन में यू डोंट नीड दैट, बिकॉज यूजिंग ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो बाय करेगा टोकन उसके वॉलेट में ऑटोमेटिकली चले जाएगा, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा हाई बैरियर है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें और इसको हम इसके बार को जो है इसको हम लोग इजी बनाएं, डिफिकल्ट ना बनाएं लोगों के लिए, और जल्दी से लोग खरीद लें और $10 में $1 में खरीद लें, तो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट इमेंसिव मार्केट, जो मदिया बता रहे थे। स्पेशली जो आपकी जेंजी है, राइट, जो आने वाले लोग हैं, आने वाला वक्त है, क्रिप्टो मार्केट आपको बता रहा है कि 14 मार्केट कैप पे जो हम खड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स हम इसको अफोर्डेबल बनाएंगे तो वो सारे लोग भी इसको बहुत एक्सेप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत हाई होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स नथिंग अगेंस्ट बैंक, बट जनरल परसेप्शन ये है कि लोगों का ट्रस्ट जो है ना बैंक से वो हटता जा रहा है। दे आर मोर कीन टू यूज न्यू बैंक, फॉर एग्जाम्पल दे आर मोर इम्यून टू क्रिप्टो करेंसी, राइट। सो सिमिलरली अगर हम एक इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट सुकूक लॉन्च करें, डिजिटल सुकूक लॉन्च करें, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी बहुत हाई होगी ग्लोबल ग्लोबल फिनोमेना की वजह से। I will not go into this slide. I am not a Sharia scholar. I'm just a practitioner. Um, but I have just kept this that if somebody wants to read what is the IFE standard, which is setting it, we can review it. Of course, uh, IFE 62 का स्टैंडर्ड भी आ गया है। तो इस शरिया स्ट्रक्चर में नॉट ओनली हम जो हमारा कोर आईएफई स्टैंडर्ड 17 यूज करेंगे, बट स्टैंडर्ड 62 भी इस पे अप्लाई होगा। कॉमनली जो हमने देखा है अभी, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, मोस्टली मुशारका और इजारा सुटेबल है। हम लोग रियल एस्टेट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टूवर्ड्स मोर सर्विस फाइनेंसिंग साइड एज वेल। मगर द वे वी आर लुकिंग इनटू, बेसिकली दीज आर द टू मॉडल्स वी आर लुकिंग इनटू। जब हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं या डिजिटल सुकूक की बात करते हैं, तो मैं थोड़ी सी चीज टच करूंगा। गो हेड डॉक्टर समझो, यू हैव क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ओके। सो टोकनाइजेशन की मैं थोड़ा टच कर दूंगा कि जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेंगे तो वी नीड टू मेक श्योर के ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो हमारे एम्बेड हो, मीनिंग के ट्रांसफर जो है वो सिर्फ जो है रिकॉर्ड का जनरल लेजर ट्रांजेक्शन ट्रांसफर ना हो, रियल ट्रांसफर भी हम कस्टमर वॉलेट में करें। तो जब टोकन को कोई ओपन करे तो उसको नजर आए कि ये टोकन जो है मदिया का टोकन है, इट्स नॉट फहाद टोकन एनी मोर। तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन हो गई हमारी, बट वी ऑल्सो ट्रांसफर दैट ओनरशिप एज वेल। इसके बाद हमें व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी हमारे शरिया ऑडिट है उसका अभी हमें हीट मैप देना है टू द फ्रंट पार्टिसिपेंट जो खरीद रहे हैं, मीनिंग के इसका ऑडिट, शरिया ऑडिट होना जरूरी है रेगुलर। और शरिया ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मैन्युअली करें, हम शरिया को ऐसे कंट्रोल दें कि वो किसी भी टाइम जाके इकोसिस्टम में देख लें कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफर फहद के अकाउंट से हुआ और मदिया के वॉलेट में चला गया, तो क्या वो आपकी वाकईतन ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। इसी तरह क्या टोकन जो है मेरेली सिंथेटिक डेट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, इसमें प्रॉपर ओनरशिप एंड पीएनएल है। वो सारी चीजें फिर शरिया उसको पीछे से दे सकते हैं। एंड हाउ दे कैन डू दैट, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो वो लेजर रिकॉर्ड पे जाके लिखे ताकि शरिया उसको देख ले। I see Dr. Samia have raised hand, but I'm not sure should we take question right now, Madhya? Yes, sir. We have a dedicated Q&A session, so I have Sure, requested everyone. Thank you, sir. no Please problem. continue. Sure. फिर हम थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं, बिकॉज आई नो इट्स प्रीटी ओवरवेलमिंग।
राइट। हमने अब कहाँ तक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम इसको माइंड मैप कर लेते हैं कि व्हाट वी डिड इज दैट हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी कि हम टेंजिबल एसेट को किसी स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट को जो है वो टोकनाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग दैट स्टैंडर्ड मीन्स काइंड ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो है हम फ्रैक्शनलाइज करके उसके टोकन्स को हम इतना रिड्यूस कर दें उसकी प्राइस के, वो एक एक आम पब्लिक जो है उसका नुमाइंदा या मेंबर उसको खरीद ले, राइट। दैट्स व्हाट वी डिस्कस अबाउट दैट। देन वी स्पोक अबाउट, I think Madiha also touched the asset identification segregation because all the Sukuk, it's not Sukuk, but any real world asset tokenization, not only Sukuk, they have to have a proper asset classification, identification in the ecosystem, as well as segregation of the asset. And then we will segregation of the accounting. I will show you on one diagram, and it's very easy to see and follow that. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस किया कि सारे टोकन जो होंगे वो एसिड बैक टोकन होंगे, दैट्स वी स्पोक अबाउट। एंड वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग ऑन द trading of the sukuk or with the atomic settlement. Basically, atomic settlement, a block, one of the terminology we use very commonly in blockchain. What it means, atomic settlement, that you don't need any middleware, like any middle party to do so. I can just go and just like I can swap Bitcoin with, let's say, XRP in cryptocurrency, similarly, I can swap my digital token into a fiat currency or USDC. USDC means के यूएस स्टेबल कॉइन जो कि डॉलर का टोकन है, राइट। तो एटॉमिक सेटलमेंट मींस दैट वन। हाइब्रिड एक्सचेंज मैंने यूज किया, आई डोंट वांट टू डिस्कस हाइब्रिड एक्सचेंज नाउ, इट्स अ डीप separate kind of a discussion. Maybe later down the road, inshallah, we'll discuss. But what we have seen in our experience in last year of experience building that, a hybrid exchange, meaning that centralized exchange and decentralized exchange. आज हमारे पास on the blockchain we have two kind of exchanges to trade, right? To trade Bitcoin. Let me make it very simple. One is these decentralized exchange, and one is the centralized exchange. Like Coinbase is a centralized exchange, right? They work similarly, but the only thing is that from the compliance and legal point of view, there are some complications. So what at Mabrook, what we decided that we will create we will sit on the sweet spot, which is hybrid. So we'll combine the power of decentralized exchange and the centralized exchange, and we combine that. But that's something we will discuss later on, inshallah. Okay. So this is what I was talking about, like how digital sukuk will happen in a very layman terminology on the blockchain. So basically, you will have some assets, right? And asset could be, by the way, as a dollar. And maybe that's not the right diagram. I should have put some real estate or something here. But just imagine there are some assets, real estate, commodity, right? Or the we were talking about the financing sukuk for a small medium business. We have a SPV. SPV is like a company. It's like normal company जो आप company register करते हैं, या जैसे पाकिस्तान वालों को कंपनी रजिस्टर कर ले अपने नाम पे, राइट। तो हम एक कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्टर कराएंगे, उसको हम कहेंगे ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है। Special purpose vehicle, I'm sure you guys know it, but you can always Google. It's like it's sort of doing something legally, structurally, and then you can have escrow and lawyer sitting on it. That's what SPV means. इसके बाद हम क्या करेंगे, जब एसपीवी उस कंपनी का नाम बन जाएगा, लेट्स अज्यूम दैट इट इज स्मॉल मीडियम फाइनेंस सुकुक को, राइट। वी आर गोइंग टू टोकनाइज दैट। उसको हम लेके सिस्टम में इनपुट करके एंड वी आर गोइंग टू टोकनाइज इट, ऑल दी बैक एंड प्रोसेसेस, मीनिंग somebody has to fund manage it, who will be mudarris, the sharia compliance component of it, कस्टोडियन मीनिंग के हम किसी बैंक को अपॉइंट करेंगे, जैसे मिजान बैंक हो गया या दो इस्लामी बैंक पाकिस्तान हो गया, क्या आप हम जो भी हमारे पास टोकन खरीदें परचेज करें, जो हम टोकन मिंट कर रहे हैं और टोकन जो परचेज कर रहे हैं उनकी कस्टडी आप लें, ताकि हम थर्ड पार्टी रिस्क को रिड्यूस करें। मीनिंग क्या कि अगर एक ही इकोसिस्टम में हमारे पास टोकन्स रखे होंगे खरीदने के लिए, और उसी इकोसिस्टम में हमारे पास फिएट करेंसी होगी और बाकी सारी चीजें चल रही होगी, और वही इकोसिस्टम उसकी कस्टडी लेगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक हाई रिस्क हो सकता है। अगर वो इकोसिस्टम डाउन हो गया तो जो भी आपका सरमाया है या वो टोकनाइजेशन जो टोकन का पूल पड़ा हुआ है
वो भी अफेक्टेड होगा। तो कस्टडी के क्या करते हैं, उसको हम थर्ड पार्टी कस्टडी में पार्क कर देते हैं एक जगह पे, जैसे कि आपका सेफ डिपॉजिट बॉक्स होता है बैंक में, राइट? वो आपका है, मगर आपको बैंक में चाबी चाहिए या दो लोग चाहिए जो उसको एक्सेस करें। तो सिमिलरली कस्टोडियन का भी कॉन्सेप्ट है कि हम उसको रिड्यूस करने के लिए कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं। फिर एक आपको ऑडिटर चाहिए होगा। Of course, Sharia compliance and auditor is separate. The blockchain auditor will be a separate auditor who will have a understanding कि मैं blockchain पे जाके कैसे चीजों को देख सकूं। Once that is done, टोकन मिंट हो जाते हैं, टोकन मिंट होके पूल में रखे जाते हैं, और जो है कोई भी करेंसी को या फिएट करेंसी को लेते हुए उनको खरीद सकता है। तो सिंपल टर्म में ये एक डायग्राम इट माइट हैव। फिर हमने थोड़ा सा, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था इजी वे में, ग्राफिकली, कि वी कैन हैव सेवरल यूज केसेस। गोल्ड भी हम टोकनाइज कर सकते हैं, सिल्वर भी हम टोकनाइज कर सकते हैं। शरिया स्क्रीनिंग हो गई, शरिया स्क्रीनिंग के बाद हमने टोकनाइजेशन करी, और टोकनाइजेशन करने के बाद हमने उसके डिजिटल सुकूक बना के एप्लीकेशन में डाल दिए। once it is there, of course it is application and this is talking to the blockchain। और हमारे एग्जाम्पल में जो टोकनाइजेशन है वो पॉलीगॉन है, and then the tokens are there. Once you buy the token, it's on your wallet, basically just like that you can start trading। So एक simple representation मैंने mind mapping के लिए I just put it for you guys so you can mind map what we spoke about। Efficiency, I think we discussed it a lot of time. The settlement time is really reduced. You can literally go T plus zero, right? Although somebody asked me practically, it's not T plus zero. There are minutes, hours, or day required in some use cases. And it's just because of the compliance and the screening of it. In an environment, in a very ideal environment where compliance allow you to do near zero settlement, then you can just go ahead and do that, right? Transaction cost goes very reduced. Of course, we know, like in Bitcoin, the transaction cost is really slow, is really low. Similarly, if you take the another use case of me sending XRP token to you, the transaction cost is like literally like very less. So we are going to leverage those. So एक example हम ले लेते हैं कि अगर एक ideal world में मैं credit card या debit card से transaction करूँ, I know, तो 2.5% चार्ज करेगी कंपनी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम इसको अपने इकोसिस्टम को लेके चलेंगे तो चार्जेस जो है फ्रैक्शनलाइज होकर 0.00001 मे बी इस तरह के होंगे, या 0.2 या 0.3 होंगे। ट्रांजैक्शन रिस्क भी जो है इसमें रिड्यूस हो जाता है, और ऑफ कोर्स ये सर इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। सॉरी, यहाँ फजर हो गई। um, फिर वील टॉक अबाउट डिजिटल सुकूक एंड बेनिफिट। We just touch everything here, which is regarding the cost reduction, the accessibility, transparency, compliance, liquidity boost, risk sharing. Of course, we are going to apply IFE ruling on it. There will be other risk compliance framework we're going to apply, and of course, the things will be secure, more secure, because we know the rule 101 is that if we apply Sharia on any structure of the transaction, it helps to basically reduce or mitigate the risk. Okay, I think I'll just bypass that. You guys can have a look. This is the project which is going to be tokenized here in Canada very soon, inshallah. It's a real estate in Hamilton, Ontario, and the idea is that the building is going to be constructed. Give me 1 second. And yeah, and then once the construction is ready, the building will be put on rent, and the rent will be distributed every month to the token holder. So I think that's pretty much, and yeah, just to excite everybody, this is how we at the system, we have basically produced a PDF. Once you invest, you will get a certificate with all your ownership information. You can print it out, you can keep it on your phone. Anybody who scans the QR code, you have two ways to go and check the validated. One is that you can go to Polyscan and you can validate it. Other way is that you log in on your Mabrook platform if you are a member of platform, and then you can also see the references there to verify. Of course, once the token is sold,
this PDF, if you have downloaded it offline, it remains there, but the moment you scan it, then it is going to show you it's not valid anymore. It's owned by somebody else or not valid. Some kind of error message will be there. I think Madhya spoke about the opportunity, so the opportunity is really huge. Um, the moment we kind of um, uh, go from our 1 trillion closing balance in 2025, I believe, inshallah, we are talking about 2x here, just by doing it on the blockchain. That's what I'm looking into. And then, the normal businesses can also come and they can also enjoy Sukuk, which they cannot. So I think with that, I'll just conclude my presentation, inshallah. Thank you, sir, for an excellent presentation. You have really enlightened us. Uh, and I'm like not speechless, but I must say that I've learned a lot from today's presentation. So I have few questions. Uh, as I can't see in chat box any question, so I guess it's too much for them to absorb or assimilate. Anyhow, it's really a very eye opener for us, a need of time. So, sir, my question over here from you is how does Al Mabrook ensure tokenized Sukuk remain compliant with AAOIFI Standard 17, especially regarding asset segregation and topmost the profit distribution without gharar? That's a very good question. So systematically, what we do, just imagine we have a web page or a screen where Sharia parameters are placed even before tokens are minted. That okay, we have reviewed the transaction, and based on that transaction, we see you have to have an SPV, you have to have a separate bank account, you have to tag that bank account on the platform. So that is about the asset segregation. All the transactions which are following, debit or credit, whether it's on a blockchain, on Mabrook is also using fiat rails as well. So we have integration with the normal payment gateway. Those should also end up from blockchain to the bank, whatever the settlements are happening using that rail. तो हम लोग क्या करते हैं कि हर हर एसपीवी जैसे हमने प्रेजेंट की थी, हर एसपीवी का एक बैंक अकाउंट होता है और उसका एक एरिया प्लेटफॉर्म होता है. उस एरिया में आप जब भी जाएंगी तो इट विल ऑलवेज आस्क यू विच प्रोजेक्ट यू वांट टू लुक, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द project. Once you select the project, it's going to open up everything. It is not like co-mingled. तो हम नॉट ओनली हम लोग अकाउंटिंग लेवल पे इसको को-मिंगल नहीं कर रहे, हम लोग इंटरफेस पे भी इसको को-मिंगल नहीं करने देते. तो स्टार्टिंग from the customer who is taking the project, so they will be tiles and they can select anyone, to the back office. If somebody is, for example, Sharia is auditing us, system will ask which project you want to audit, and only that project information will be relayed. And I think, so, sorry, Sister Madhi, your second question was, if you can remind me, my apologies. Sir, my second question was regarding gharar. How Okay, do the you and we yeah. yeah, and the PDM part of it, the profit distribution. Yeah. So what we do is that first, when we are structuring the sukuk, we are projecting the estimated return on it. So we are not, and the disclosure says everything, right? You can go to the disclosure, and basically you can see what is going on. So I'll just give one example. I think the visual will help to everybody. So I'm just showing you from my sandbox, not the production environment. So let's assume we have like so many projects. So every project has its own uh, characteristics, and those are reflected on the system. If I go into the project like the one I was sharing about, and I can see what is the token price and all that. The point is that in the documentation, in the FAQs, and the estimated return, right? These are all disclosed here, that what is happening. And if somebody has question, they can always come and ask us via AI chatbot, or they can give us a call, or they can log in and they can talk to us in real time. So that's how we are basically reducing the gara.
So there's no ambiguity. Second, the profit distribution also is approved by the Sharia, and it follows the IFE standard. So we are using smart contracts to churn the monthly profit into it, all the profit distribution. So that's Thank a you, very sir. quick answer to your question. You're welcome. Thank you, sir. Sir, another question, as you have mentioned Gen Z. So, uh, you have also mentioned that there is dollar 100 as minimum investment amount. Does this mean that a prudent student in Indonesia or a young nurse in Canada can truly invest in the same Dubai real estate project? Yes. That's the beauty of it. So blockchain, is blockchain क्योंकि आपको पता है global infrastructure है. It's not tied up to some country. There are some complex. I mean, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, especially when in regulation. But let's say अगर आप compliance एक मिनट के लिए भूल जाएं, regulations एक मिनट के लिए भूल जाएं कि भाई कौन सा country से क्या खरीद सकता है. For example, कनाडा में जब हम रोल आउट कर रहे थे, we had the same impression कि एक foreign investor invest कर लेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कनाडा में हमें इसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरी में जाना पड़ेगा. तो टोकनाइजेशन हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ कैनेडियंस के लिए. अब हम यूएस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे कैनेडियन रेगुलेटर ने कहा गो एंड गेट अ यूएस लाइसेंस देन कम बैक. तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि ये कंप्लाइंस की चीज है. इसको हम थोड़ी देर के हटा दें. सिस्टमेटिकली यस, एनीबॉडी कैन कम टू मबरूक एंड देन दे कैन, और कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिससे आप टोकन खरीद लें, दे कैन जस्ट यूज $1 एंड बाय इट एंड द टोकन विल मूव फ्रॉम द एसपीवी और द पूल टू देयर वॉलेट. और वो कोई कहीं भी दुनिया में बैठा हो सकता है, कहीं भी. That's the beauty of this thing. Yes. Okay, sir. Uh, Another question. Uh, I forgot one question. You have mentioned something like T plus zero, that ideally it has T plus zero, but can you share the impediments that are making it not T plus zero in actual, Because considering blockchain, the yeah, Pakistani environment? yeah. So see, the blockchain, and it is not specific to Pakistan. It is everywhere, and it is basically from the regulatory side, right? Because sometime, when you are, for example, if I deposit some amount, let's say 10 million in your account, Madiha, right? मैं आगे अकाउंट में अगर मैं जैसे कि 1 करोड़ डाल दूं, तो ऑफ कोर्स बैंक मुझसे पूछेगा कि तुम कौन हो, That's a dream. राइट? और बैंक आपको भी फोन करेगा कि ये इसने मुझे बताया है कि फहद है और ये 1 करोड़ डाल रहा है आपके इसमें, आप वेरीफाई करें. वो आपसे ही पूछेगा. बिटकॉइन में ऐसा नहीं है. बिटकॉइन, देर इज नो रेगुलेशन, राइट? कोई रेगुलेटर नहीं बैठा हुआ. जो बिटकॉइन कम्युनिटी है वही इसको ओन करती है. तो वो ट्रांजेक्शन सीमलेस हो जाती है. सिमिलरली हमारे, जब मैं कहता हूँ T+0 या T+near 0 या T+1 कहता हूँ, उसमें ये होता है कि एफिशिएंसी, तो वी गेन द एफिशिएंसी ऑफ द ब्लॉकचेन. हमने कर लिया, एफिशिएंसी ले ली, वी गॉट द एफिशिएंसी ऑफ द ब्लॉकचेन. बट रेगुलेटर विल क्लासिफाई सम ऑफ द ट्रांजेक्शन टू बी रिव्यूड. Can be reviewed by AI, can be reviewed by some third party, but that's why it's taking little time, because they really want that reflection to happen somewhere, on a centralized what you call compliance or risk operations, and then transaction will be moving to the beneficiary. That's why it's taking a little time. Thank you, sir. Sir, I have two more questions for you, and then we will Go wind up ahead, our session. inshallah. Sir, uh, being uh, a new beginner or novice, you can say, uh, I have another question regarding this atomic settlement. I'm not very well versed with these words, but are these tokens really traded on hybrid models or on decentralized exchanges? I'm a bit confused about this thing. Okay, so let's, and I know a couple of people have the question, they have raised their hand, so I'll let you review them, Madhya. So let's try to separate atomic settlement with the exchanges. So atomic settlement is a transaction time. It is just like credit and debit. So atomic settlement means if I have a fiat currency, in a very simple example, in my wallet, like Easy Pesa example, can I click one button and convert it into Bitcoin? That is atomic settlement.
Meaning what happened that the blockchain will take your money, it will just convert it into Bitcoin, and it will do something behind the scene without a middleman. That is what atomic settlement means basically. So that's why it's faster, it's efficient, it's cost effective. Blockchain, a hybrid blockchain, it's a subject itself because we have to really study what exchange definition is. In the world, there are two kind of exchanges. One is the decentralized exchange, and one is the centralized exchange. So what they do the same function. Decentralized exchange is not heavily regulated, very little or none. Centralized exchange, however, they are regulated. They have to get the license, they have to centralize the operation. It's not owned by the community, right? The exchange is owned by some entity which is reporting to something like PVARA. Decentralized exchange does not have to be owned by one entity. It can be combination of so many members, and then they can basically. So that's the crude way to basically bifurcate them. We'll have inshallah deep webinar on this subject if somebody is interested, inshallah. Yes, sir. Definitely, we are very interested. Sir, we have question from Mohammed Idris. He has raised hand. Please kindly share your question. Assalamu alaikum ji. Thank you very much for this nice presentation. I just actually joined a little late than you started. Being a very, very beginner in this, virtual currencies or so, I just wanted to understand, जो मैं समझा हूँ, मैं थोड़ा clarify करना चाह रहा हूँ कि to trade on this Sukuk, first of all, I need to have an account with some exchange, correct? Yes. Yeah. So what are the exchanges available? Is Mabrook is like an exchange or? Mabrook, Mabrook की अभी exchange live नहीं गई है क्योंकि we are still working on the exchange bit with the regulator और हम उसको build कर रहे हैं. इंशाल्लाह लाइव चली जाएगी. अभी Mabrook सिर्फ टोकनाइजेशन कर रहा है, प्राइमरी मार्केट खड़ा कर रहा है. To answer your question, Okay. exchange में अकाउंट बनाना है, yes. अब क्या, like the way, there are two ways to answer this question. So let me answer it from the Mabrook way, so it becomes very clear to everybody. So when you log into Mabrook, you just have to make account one time. You just create your login. आप अपना login बनाइए, अपना शनाख्ती कार्ड डालिए और जैसे भी बैंक में करते हैं आप वो सारी चीजें कर लीजिए. सारी चीजें ऑटोमेटेड है. यू डोंट हैव टू वॉक एनीवेयर, यू कैन जस्ट डू इट फ्रॉम योर फोन, जो कि मोस्टली पॉपुलर एप्लीकेशन इसी तरह करती हैं. इसके बाद आप वंस यू आर ऑथराइज, आप वहां पर टोकन खरीद सकते हैं और अपने वॉलेट में रख सकते हैं. जब सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी, आप यू डोंट हैव टू ओपन अकाउंट. सेकेंडरी मार्केट के आते ही आप जो है अपने टोकन को सेकेंडरी मार्केट में मबरूक में सेल कर सकते हैं. अच्छा, अब हम हार्डकोर एक्सचेंजेस को देख लेते हैं, जैसे बाइनेंस है या कॉइन बेस है. इन एक्सचेंजेस में आप अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, जो जो कि रेगुलेटेड है, राइट. बहुत सारी एक्सचेंजेस है, उसमें आपको जरूरत नहीं है अकाउंट खोलने की. आप अपने ईमेल से या अपने ऑफ जो है ना नॉन कस्टोडियल वॉलेट जैसे मेटामास्क है, उसी को यूज करते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. दे डोंट आस्क यू टू डू सो. So जो रेगुलेशन साइड है, आई विल जस्ट एम्फसिस ऑन इट. एनी रेगुलेटेड एक्सचेंज वुड वांट टू सी हु यू आर. क्यों? इसकी वजह ये है कि जैसे बैंक फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शन अथॉरिटी को ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं, इसी तरह एक्सचेंजेस भी रिपोर्ट करती हैं. तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि ये आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. अभी आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत एफिशिएंट है, डिजिटल सुकूक बहुत एफिशिएंट है, फिर आप वही बातें कर रहे हैं जो कि एक बैंकिंग में होती है. होता है कि जब आप ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिटकॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एफिशिएंसी है या ब्लॉकचेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट यू आर नॉट रिमूविंग द रेगुलेटरी पार्ट ऑफ इट. वो स्टिल रहता है. तो इसलिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा क्योंकि चीजें बड़ी फास्ट होती हैं. लाइक जब आप ट्रेडिंग, वंस यू ओपन एन अकाउंट एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग, इट्स रियली फास्ट. लाइक एटॉमिक सेटलमेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी. देन यू आर प्रीटी मच ओके अंटिल अब जैसे मबरूक में हमने क्या किया कि एक हम लोगों ने पीछे एम्बेड कर दिया. आई डोंट गो डीप इनटू द टेक्निकल थिंग, बट आई थिंक आई शुड से समथिंग आउट so people understand and they can comprehend in their mind like what is going on. So when you open an account, it does not mean that you are just free to trade whatever you are trading. There are certain limits that will be defined which are subject to the country regulators, right. पीवारा को डिफाइन करेगा. इसी तरह हमें कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है कि ठीक है, इदरीस ने फहाद को टोकन दे दिया, मगर फहाद जो है कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ है कि जो कि सैंक्शन है, तो वो अलाउ नहीं होगी.
तो वो सारी चीजें इसमें हैं। ऑफ कोर्स जब हम डिसेंट्रलाइज पे जाते हैं, एक डीएओ में जाते हैं, मीनिंग के जो कि रेगुलेटेड नहीं है, फिर वहाँ कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको भी ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर आई होप कि मैंने इस सवाल का जवाब दिया। Yeah, but I understood is कि अगर मैं चाहूँ तो I can go on Binance and open an account and trade Sukuk from यस, that platform, यू or कैन I डू can दैट। go simply directly to Mabrook and open an account and then do the same transaction through your platform, right? बोथ वेज यू कैन डू, यस, यू कैन डू बोथ वेज। And whatever the KYC or the verification has to done, वो आपके प्लेटफॉर्म से जाएंगे तो जो आपका प्रोसेस है you will go through वेल, that, and if it is एग्जैक्ट, the finance or anything else तो उनके मुताबिक हो जाएगा. करेक्ट, Oh, and करेक्ट। this is the spooks are available now for investment on both नो, platforms. नो, नो, मबरूक में हमने अभी लॉन्च नहीं किया, अभी 2 वीक्स में हमारा पहला आ रहा है। Okay. And the first one you बाइनेंस told, का which is मुझे in पता नहीं। Toronto, that this टोरंटो, building यस, 3 to 5 हैमिल्टन branches, में, जी, right? जी, हैमिल्टन Okay. में, हैमिल्टन। Hamilton. टोरंटो से, Okay. टोरंटो से आवर एंड 15 मिनट्स ड्राइव। Okay. And the company, your Mabrook, is based out of इन which कनाडा, place? In Canada. टोरंटो। Okay. 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 And the बट regulation which you're talking about या will be your local कैनेडियन Canadian रेगुलेशन, environment or so. The यस, regulatory कैनेडियन authorities रेगुलेशन, of Canada will be, बिल्कुल, supervising all those. Okay. जी, यस, यस। Thank you, Sadat But sir. Sadaqat we sir. are not selling Mabruk here, so it's just awareness and I more understand. I to understand. get. I understand. Okay. Hello, Thank you, Alaikum. sir. Thank you. You provide the very informative knowledge. I shared the one idea of you when we are working at women development and mother and child development project. Can we develop the woman-based bottom bond for initial small investment to help to child bring up and child finance? How can possible we develop these type of investment, a small mini amount saved for the children future and mother save some cash for the children future and children education? Can you develop the new product, these models? Yes, yes. So those models already exist, sister. They come under the umbrella of impact investment. Impact investment means that anything where we invest, we make money out of it, of course, halal way, but it also help the society or the community. They come under the impact finance. And there's I will just give you an example. 58% of the North America consumers, they're looking for impact investment. They are happy to reduce their profit for a good cause. And from Mabrook perspective, there's something going on. Inshallah, we'll announce next year. We are working on something similar here. But yes, that can happen as well. So next question is from Mr. Ali Odoshri. I'm requesting him to unmute himself. Okay, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you very much, Fahad, for this actually wonderful presentation, and it's actually very insightful. And it has touched on the new trend where the Islamic finance is moving towards digitization, tokenization, basically. So in your presentation, you made mention that the model you use is in line with the IOP standard 17, which basically talks about the investment sukuk. However, actually there is IOP standard 62, which is the revised sukuk standard, which covers the 17 and also offers elaborate view and version of actually sukuk issuances. And it gives more emphasis to asset-backed sukuk issuances rather than the previous asset-based that we have or asset-backed. So now it's tilting toward asset-backed, where the subscribers or the sukuk holders will have direct recourse to the asset itself.
So how can we actually align the DigitalSukuk to the IOP standard 62? This is question number one. Number two, for instance, here in the West African part of the world, more especially in Nigeria, we are yet to actually start moving into the digitization of securities, more especially when it comes to regulated environments. So what infrastructure is required for us to actually offer digitized Sukuk in under the centralized exchange, more especially when it comes to regulated environment like ours? Thank you. You're welcome, brother, and I'm glad you bring it up. So as I was explaining it from the adaptability point of view, and I did touch 62. That 62 is also there. It's the latest and greatest, but from the adaptability and maturity side of it, because remember, IFE 62 standard came in just 2023. It's still deliberation and the adoption and the flow of it to the IFI is still happening. There are many questions that we have to ask on that. That is why I was just going towards 70, which is more mature. But anyhow, yes, you are right. 62 can be also applied. The structuring can be applied on it, as you have also mentioned. I was talking about the impact about that. So impact investment also is a very 62 standard is a very good one because it shies away from saying that Sukuk is a debt instrument. We are not allowed to say Sukuk is a debt instrument. It should act like a आवाज आ equity-like रही है? instrument, right? So you are absolutely डैडी right. को We कहा can नवाज structure अंकल that. को कहें नीचे. And sorry for that. And what I was saying that to answer your other question for infrastructure, yes, let's say the Mabrook infrastructure is ready, and if somebody in Nigeria would want to do something, we are happy to help, inshallah. Mabrook is for everybody. Now it's not like something for us and us only. It's like for global phenomena. So we have built it, alhamdulillah, ourselves from zero. So this technology anybody can leverage across the world to do it things in regulated way. Thank you, sir. Thank you for really a very, I must say, a crystal clear explanation of how ethical tokenization, not speculation, can serve nearly 2 billion Muslims across the world who are ethically conscious. Uh, and one more thing for our audience, as you know, we are a bit clear about, in fact, we are more than clear about that digital sukuk is not equivalent to crypto. They are real asset-backed, regulated, Sharia-governed securities. Uh, and topmost, an income-generating asset once reserved for institutions. For more, you can visit almabrook.io and stay connected with the Al-Sadiq Institute for future sessions on Islamic funding. May your investments be halal and your returns barakah, and your impact definitely global. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and jazakallah khairan. Thank you, sir. Wa alaikum assalam. Thank you very much. Assalamu alaikum to everyone. Allah.